editions. And in the 2 days journey of which you are already a part through this inaugural session, we will look and try and explore the various facets of Buddhist philosophy and how it got its expression in the several art forms. So, right at the beginning, as is customary, I will request all our dignitaries sitting right in the front rows to please approach the dais for the igniting of the lamp in worship of Goddess Saraswati, the goddess of wisdom and learning. May I please request all the dignitaries? To her to bless us for the successful completion of this 2 day seminar. I request, first of all, our chief guest, Professor S.P. Sahil, to be on the dais, please. Professor S.P. Sahil. I request Professor Anand Singh to be on the dais, to be with us on the stage. And request Professor Anamika Roy to be on the dais, please. I'll also request Professor Ashtar to be on the stage, please. Dr. Ramakant also to please be on his seat. Also request Dr. Atul Narayan Singh. As a mark of our respect, we felicitate and welcome our chief guest, Professor S.P. Sahil, with an Angvastram, bouquet, and a Momento. To felicitate Professor Anand Singh. And now request Dr. Atul Narayan Singh to say put there, please, in order to felicitate Professor Govind Singh.
I request Dr. Hima Kumari. State, Professor Harsh Kumar. I'd like to request Dr. Mukesh Singh to be on the stage to welcome and felicitate our head of the department, Dr. Ramakant. Stage in order to welcome and felicitate the convener of this seminar, Dr. Atul Narayan Singh. I would now invite the head of the department, Professor Ramakant, to be on the dais to shed some light on the seminar itself. हमारे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि हमारे विभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अध्यक्षता मैंने कह दिया, मुख्य अतिथि मगध विश्वविद्यालय बोधगया के प्रोफेसर यशवी शाही जी हैं। अपनी प्रशासनिक व्यस्तता के बावजूद सर ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज अपने आशीर्वचन के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इसके लिए पूरा प्राचीन इतिहास विभाग सर आपका आभारी है तथा इस सभागार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में हमारे ही विभाग के वरिष्ठ आचार्य अध्यक्ष के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। सर के सम्यक मार्गदर्शन में ही इस संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। मैं सर का भी इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के बीच मंच पर आसीन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद सिंह जी हैं। उत्तराखंड सरकार में चीफ मीडिया एडवाइजर प्रोफेसर गोविंद सिंह जी हैं। हमारे विभाग की वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर अनामिका राय मैडम हैं। मैं इन तीनों महाजनों का इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस सेमिनार के कन्वीनर अपने सहयोगी डॉक्टर अतुल नारायण सिंह का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत से यह सेमिनार आयोजित हो रहा है। इस सभागार में हमारी गुरु परंपरा में भी कुछ लोग उपस्थित हैं, जैसे प्रोफेसर एच.एन. दुबे सर, हमारे कुलानुशासक प्रोफेसर राकेश सिंह जी, फिलॉसफी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर गोपाल साहू जी, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, अन्य जो भी मतलब कि विश्वविद्यालय परिवार के आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा
कई विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों से आचार्यगण पार्टिसिपेट के रूप में आए हुए हैं। सबसे बड़ी संख्या ढेर सारे रिसर्च स्कॉलर्स की है और हमको सूचना मिली कि लखनऊ विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर सबसे ज्यादा पेपर मिलते हुए भागीदारी निभाए। आपकी सम्यक भागीदारी से ही हमारा यह सेमिनार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं अंत में मंच पर आसीन गुरुजनों का तथा इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Ramakant sir. Moving ahead with the inaugural session, I just want to share with all of you that on the 27th and 28th of the month of March 2025, we held a seminar, a 2 days national seminar on rivers of India, history, culture and challenges towards conservation and solutions. I, on behalf of the entire department, is glad to share this information with you that the contributions in form of papers have been compiled and a book has been prepared. Now the proceedings of the seminar in form of a book will be today released. So I'll request all the dignitaries here, and I think this is the most opportune time for all of us to see the book being released through the hands of such luminaries who are on the stage. I have to share this again with you, that the untiring efforts of the entire faculty member who have spared their precious time in sifting through the various contributions, suggesting corrections, and then also urging people to make necessary amendments, actually then helped us in the actual coming out of this book. So I seek this opportunity to thank all my colleagues, my seniors in the department also, who left no stone unturned in actually making this particular book, getting to this particular stage. The proceedings is titled Rivers of India, History, Culture and Challenges Towards Conservation and Solutions. For our welcome address, I will now like to invite and request our chief guest, Professor S.P. Sahi, Honorable Vice Chancellor to the Magadh University, Bodh Gaya, to please be on the podium to share his views. Sahi, sir. सर्वप्रथम प्रयागराज की इस संगम की इस धरती को मेरा प्रणाम, और खासकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमें बुलाया और इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ डायस पर बैठे हुए आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हर्ष कुमार जी, प्रोफेसर अनामिका राय जी, प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, प्रोफेसर आनंद सिंह जी, रमाकांत जी, तमाम उपस्थित शिक्षक, शोधार्थी, छात्रों, मीडिया के बंधुओं,
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस पवित्र धरती और वैसे विश्वविद्यालय में आज मुझे मौका मिला है जिसने पूरे देश के अंदर प्रशासनिक पदों पर पैदा करने का काम किया है। उस विश्वविद्यालय को जो अपनी गरिमा, अपने बड़प्पन, अपने कामों से पूरे देश में जाना जाता है। और आज भी मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लोग मानता है अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप जाते हैं तो कुछ न कुछ करके जरूर आएंगे। ये आज भी ये लोगों का विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है, यह धरती पुण्य धरती रही है। इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हर तरह से प्रयागराज की धरती जो अपने आप में पुण्य भूमि मानी जाती है। पिछले साल ही संगम लगा था। पूरे दुनिया ने संगम को विभिन्न विधाओं से, विभिन्न परंपराओं से, विभिन्न विचारों से उसको आत्मसात करने का प्रयास किया और पूरे विश्व के लिए एक गौरव की बात थी कि कैसे इतना बड़ा महाकुंभ इलाहाबाद प्रयागराज में लगा। तो उस धरती को भी मेरा नमन है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया। आज का टॉपिक को, मैं राजनीति शास्त्र का शिक्षक हूं, लेकिन मैं ज्ञान और मोक्ष की धरती बोध गया से आया हूं। और आज का टॉपिक है बौद्ध दर्शन एवं उस पर कला का प्रभाव। तो बौद्ध के बारे में बहुत बातें कही जाएंगी, लेकिन आजकल ज्ञान परंपरा की बात हो रही है। तो ज्ञान परंपरा की बात हो रही है तो मेरी समझ से बौद्ध, महात्मा बुद्ध उस ज्ञान परंपरा के सबसे बड़े ध्वजवाहक थे। महात्मा बुद्ध ने जो शांति और करुणा का जो संदेश पूरे विश्व को दिया वो आज भी प्रासंगिक है। अभी पिछले माह मुझे कोरिया में जाने का मौका मिला, दक्षिण कोरिया में। तो वहां ईसाई धर्म के भी मतावलंबी हैं, लेकिन आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुयातक में वहां हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले, समझने वाले हैं। और बौद्ध धर्म का बहुत मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बौद्ध धर्म पूर्णतः नैतिकतावादी दृष्टिकोण को अपनाता रहा और बौद्ध धर्म हमेशा शांति को बढ़ावा देता रहा और उस धर्म के जरिए विश्व में शांति की भावना, करुणा की भावना को बढ़ाने का काम बौद्ध धर्म ने किया। और प्रकारांतर में उसका प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका में, म्यांमार में, दक्षिण कोरिया में, जापान में, चीन में, वियतनाम में, कंबोडिया में, ताइवान में, सब जगह हुआ, मलेशिया में। तो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी क्वालिटी थी जिसकी वजह से आज भी वो प्रासंगिक है। आज का टॉपिक जो है कला पर प्रभाव। आप जानते हैं बौद्ध धर्म का कलात्मक अगर देखना है तो आप जाइए अजंता और एलोरा। पूरे भारत का दर्शन है। अजंता एलोरा को आप देखते हैं तो पूरा भारत दिखता है, पूरा राष्ट्र दिखता है। आप चले जाइए बोध गया में तो कहीं न कहीं वहां जो पांडुलिपियां, आर्ट्स को दिखते हैं वो बौद्ध धर्म और भारतीयता की बात करते हैं। राजगीर में आए हैं आनंद बाबू, वहां भी हर जगह
चारों तरफ कहीं न कहीं मतलब नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के नौबिहार तक बौद्ध कलाकृति और बौद्ध आर्ट देखने को छोटे ही स्तर पर लेकिन अवश्य मिलता है। तो बौद्ध धर्म ने अपने धार्मिक विचारों के साथ साथ अपने कलात्मक सृजनता से भारत को, भारतीयता को, भारत की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने और समृद्ध करने का काम किया है। और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमेशा शांति की बात करता है। आज पूरे देश में क्या है, हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कौन बढ़ाएगा? सिर्फ सरकार नहीं बढ़ाएगी। आप हम जैसे शिक्षक, शोधार्थी और छात्र मिलकर जब तक भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, इस राष्ट्र का कल्याण नहीं होने वाला है। आप देखिए, मैं शोध पर आता हूं। शोध में आपकी तो परंपरा बहुत लंबी और बड़ी परंपरा रही है, लेकिन हम एक सच कहना चाहेंगे कि देश में शोध का जो स्तर होना चाहिए वह नहीं है, आज भी नहीं है। कुछ संस्थानों, कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ करके शोध का स्तर ऊंचा नहीं है। और जब तक शोध का स्तर मौलिक और उच्च स्तरीय नहीं होगा, भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इसलिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के कार्यक्रम करके यहाँ पर देश के विभिन्न भागों से शोधार्थियों को बुलाया और बहुत सारे शोध पत्र आए। तो ये कहीं न कहीं शोध पत्र राष्ट्र के नवनिर्माण में किस आर्टिकल में क्या छिपा है, कुछ न कुछ संदेश दे करके जाएगा। और मैंने तो अपने विश्वविद्यालय में एक प्रयोग किया, और प्रयोग यह किया कि वहां पर सत्र लेट रहता था और 5-5 साल की परीक्षाएं नहीं होती थी। तो हमने हर विभाग को एक कुछ टास्क दिया कि आप इस तरह के कार्यक्रम करते रहें, और इस तरह के सेमिनार, वर्कशॉप, स्पेशल लेक्चर वगैरह करने से संस्थाएं जीवित होती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में तो हमारा हमेशा रिस्पेक्ट रहा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इन सब कामों में आगे रहा है। लेकिन कोई भी कार्यक्रम इस तरह का बौद्धिक कार्यक्रम, बौद्धिक विचार विमर्श हमेशा ही एक रास्ता दिखाने का काम करता है। इसलिए मैं शैलेंद्र जी और आपकी टीम, हर सर को, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम करके पूरे देश से बुद्धिजीवियों को बुला करके, हमारे जैसे लोगों को भी बुला करके आपके बीच आने का मौका दिया। इसलिए आप सबको बधाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके शोध पत्रों से कोई ऐसा शोध पत्र और कोई न कोई ऐसी बात निकल करके आएगी जो राष्ट्र के सम्यक विकास और उसके आत्मनिर्भर होने में हमको संबल प्रदान करेगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप बात करते हैं, बहुत सारी लंबी बातें होती हैं, हर जगह राष्ट्र में धर्म की और दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन सच यह है कि बौद्ध के दर्शन, बौद्ध के दिए गए उपदेशों और उन्होंने जो कलाकृतियों के जरिए भारत को जोड़ने का और पूरे विश्व की मानवता को जोड़ने का जो काम किया है वो अपने आप में अद्भुत है। बौद्ध ने क्या कहा है? लड़ाई झगड़ा मत करो, शिकायत मत करो, मिलजुल करके शांति के भाव से रहो। और दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि अमेरिका कहाँ आगे है, पश्चिमी जगत कहाँ आगे है, चीन हमसे आगे है, और हम आपस में लड़ करके एक धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बढ़ करके हम भारत का भला नहीं कर रहे हैं। और भारत का तब तक विकास नहीं होगा हम जब तक जाति धर्म को छोड़ करके समर्पण की भावना से और बौद्ध के विचारों को
आत्मसात करके हम राष्ट्र को जोड़ने का काम नहीं करेंगे। और खास करके हम विश्वविद्यालयों का काम क्या है, बौद्धिक डेलिब्रेशन करना और बौद्धिक इस तरह के विमर्श करके शोध के स्तर को ऊंचा करके हम राष्ट्र का सम्यक विकास कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम आप हमेशा करते रहिए। इस तरह के कार्यक्रम करने से नए टीचर्स के बीच ऊर्जा का संचार होता है, छात्र सीखते हैं, शोधार्थी आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं कि आज का यह कार्यक्रम राष्ट्र के नवनिर्माण में और विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस गरिमा को बढ़ाने का काम करेगा। धन्यवाद। Thank you, sir, for your such enlightening thoughts. I do believe that your thoughts would go a long way in motivating the students, the researchers, and the young faculty members. You emphasized on the continuation of the knowledge traditions from the times of Buddha up to the current times. And you also invoked and stressed upon the fact that those knowledge traditions are being carried both through the University of Allahabad as well as through your university, both Gaya. So thank you so much for your enlightening thoughts. I will now request Professor Anand Singh ji to be on the podium to deliver his keynote address. Professor Anand Singh ji needs no introduction. Currently working at the Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, he will definitely entice and enlighten all of us through this keynote address. Please, sir. सुप्रभात, good morning, सम्मानित मंच and dignitaries, students of the dais. Before beginning, a courtesy to pay respect to all respected dignitaries. So first, Professor Harsh Kumar ji, who is chairing this session, is like a teacher and source of inspiration since our incident age, and it's a very soliciting and satisfying that under his chairperson, I'm just presenting my views here. Professor S.P. Sahi Singh ji, Vice Chancellor, Magadh University, like an elder brother and very affectionate. Magadh mera karya kshetra raha hai, and every time when I call him and just sent message, he immediately responded despite his busyness. And bolo. So almost his affection is always with me, and this gives me it's a kind of encouragement that's wandering in the wild land of the Magadh for our academic work. And Professor Anamika Rai ji and off the munch two other teachers, Professor Upi Srivastava ji and Professor S.N. Dubey ji, they are actually in our students is a source of inspiration that how you have to start work. So I am just also just pay my respect to them. And Professor Govind Singh ji, who is just invited here, Professor Ramakant ji, get chance to interact with them and share their knowledge. And at last, Dr. Atul Narayan Singh ji, that is like he is the person who just told me that you have to come here for just your keynote address. So without just thanking him, my deliberation would not start, you can say. So
he is very enthusiastic person, and it has had a source of inspiration for younger one, that conducting seminar lectures in these days is almost a big courage. So thank you, Atul Babu, just for inviting me. And now my deliberation is just teaching of the Buddha and their reflections on Buddhist art. Philosophy, you can just understand. Teaching, just I've given this topic to cover a very wider arena of how the Buddhist teachings and philosophical aspects started art's representation since the age of the Buddha, and still such processes continue in the Himalayan region of at least India and at least Southeast Asia and East Asia and other part of the world. So you see that when you talk about that how a tradition begins, whether it is a Buddhism or other Indic religions started thinking about their teachings and its linkages with of the teachings with the art, the very prime thinking is that teaching and philosophy is a very subtle aspect, very almost mystical aspects, and you can say that difficult aspects of any religion. So it is not for every state of person to clearly understand it, embrace it, adopt it and implement it. So there is only few section of the people, maybe monk community. Even within the monk there is some kind of hierarchy that who can truly understand the philosophical aspect. But if you have to disseminate teaching and penetrate the teaching into every state of the society, you have to adopt a different kind of modus operandi for just dissemination, and for that the art is very important medium. And so the teaching can be the best, you can say, communicated through the art. And every teacher of different Indic traditions, even of the Semitic tradition, understand this aspect and always link the art to their philosophy and teachings. Buddha was not an exception. When you talk about that, how Buddha started thinking about that it's the art representation that developed majority of things in the after, you can say, Mahaparinirvana of the Buddha. So it is almost accepted that the material culture that represents the art was basically the tradition borrowed and assimilated from the previous traditions. Which were the previous traditions to exist? Previous traditions, that was also the continuous tradition known to everybody that belongs to that Harappan civilization's tradition of, and then Vedic tradition. So almost this kind of beginning just started, and its final evolution in art take the different shape in aniconic form of a structure, in iconic form of a structure, that intermingling of the different aspect of the religion and art. So this kind of just thing started taking shape in the age of the Buddha. Though art itself did not properly come in the age of the Buddha, but the conceptualization of that art was either developed by the Buddha as his disciple in his lifetime, but its proper implementation started only after Mahaparinirvana of the Buddha. Very first thing, you have to also understand that art is meant for propagation of the all. So generally people just confuse this aspect that art has a very specific narration and it would be generic. It is not. Especially in the case of Buddhism, Buddha has the idea
there is two kind of hierarchical organization or stratification. One is the monastic community. So what kind of art form or visual structure is necessary for them? And the second aspect is that is majority, the lay people, the laity, common people. So that the art form and representation, what is necessary for it? So there is a clear demarcation, and the first beginning that begins with the monastic tradition, but now it became more popular in the common arena. And that was first, that what was the monastic tradition? Buddha became Arahant, he became enlightened, and when he founded the monastic community, definitely there was a monastic community who joined his order and want to be Arhat, want to be enlightened. So very first thing, that what should be the proper mechanism for the enlightenment, and the proper mechanism of the enlightenment was definitely what? Meditation. So meditation, two proper mechanism that started, that was explained in the various suttas, Anapana Sutta, Satipatthana Sutta, Mahasatipatthana Sutta, and it was taught to the monk, and that became one of the most important aspect of Buddhist art. And what was that? I am just quoting one quote from the Digha Nikaya. Buddha says that how you meditate. One monk asked that how you can meditate. So he says that it should be the Majjhima, it should be the middle. There should not be a rigorous process. So he says, what can be the posture? So he says, in the posture as you like. So he just says that monk knows that how he has to how he has to meditate. So he says that, just quotation, he knows I am walking. He knows when standing, he knows I am standing. He knows that when he is sitting, then he knows when he is, you can say that, lying down. So you see that how a kind of meditative technique he discussed, and later on you find it, this gives one of the very important aspect of the art, that Buddha was in sitting posture, Buddha was in lying posture, Buddha was in walking posture. You will just see some of the fundamental arts that later on. Definitely, I am just not saying it that Buddha almost did it on its own. How Buddha adopted it? So he just mentioned it like a Nagar Sutta, he says. People say that how you evolved a teacher? Are you just developed on your own? So he just mentioned that there is a Sutta, Nagar Sutta, that my teaching is like a forgotten city. And that city finally was just forgotten, that forests grown are there. And then after that, one king was hunting and just wandered in that land and finally rediscovered the city. And it was again became prosperous. So my teaching is lying down. It is ever existing, scattered, and finally I discovered some of the prominent factors from that and evolved my own idea and own methodology to teach. So the art form has the same kind of things. It is ever existing, and finally he evolved the material culture from the previous existing culture. And some of the very prominent art historians of the world globally acknowledge this finally, like Rhys Davids. I have mentioned only few names, like K.P. Jaiswal, like Durga Prasad, Ram Prasad Chanda, Dori Srinivasan, even my teacher K.K. Thupaliar, that finally he says that art form is just developed out of the existing culture. And conference is basically a foundation, a stage when a new kind of researches must also be explored and discussed. So why this I am discussing this slide, and everybody know that this slide, the first slide is the
Harappan priest. That priest is found from Harappa. How it became foundation of all Indian religions, this work on, I want to cite, and it was not, it was done by one of the very wonderful scholar, that is Jansen, a German scholar, who was a physicist turned Indologist come Buddhologist, who just studied the geomorphical study of the rock and learned the posturing, that how this particular image can actually shape when it was not broken. So you see it, she found that actually the priest was sitting in that posture, and your posture, can you directly see it? He is sitting in the asana, he has the Bhumi Sparsh Mudra. Then finally you see that it is a Harappan seal. And finally, one of the most popular mudra in Buddhist art is the Bhumi Sparsh Mudra. So he sees that how mudras taken into hundred of asanas he studied, and finally found its main resource can be found from the Harappan civilization. Material culture is very important that she discussed. He found other objects also. That first time he mentioned that how this kind of thing, how Buddhists adopted it. You will see it in the picture. You will find it. That priest has very important designation in all Indic religion. In Brahmanism, you see the dress, that is one shoulder is open. Buddha adopted this dress, it's a plain. In Brahmanical tradition, when you go for the Agnikayan ceremony, I have just mentioned in the Satpat Brahman, you find it, same kind of dress is found, it is printed. बड़ा पॉपुलर है आजकल रामनामी दुपट्टा, ये देखो रामनामी दुपट्टा इंडस वैली में मिला हुआ है, देखिए Jansen's model is very appropriate, and how Buddha adopted very important art form. That asana that you see in the previous slide was taking independent position, and we found it. Professor Shahi is coming from the Bodh Gaya. This Bodh Gaya is most prominent religious place. That is the platform, what is called it Bodhi Manda. That is the asana he is taken. So it is one of the earliest asana representation, and considered to be the most sacred in the Buddhism, is taken from that material culture. That is Jansen's theory. That is, you can say, accepted by all important, you can say, Indologists. And you see that, showing this picture, you can resemble the priest picture with that mudra, that is from the Ratnagiri, is found in. Other is that Padmashan mudra, that is found in the Sarnath. So you found it that how that art form taken into the shape, and its foundation was laid itself by the Buddha's teaching and Buddhist philosophy. Next one. Again, I am just giving you very important example, that is Buddha's core philosophy, that you call that Paticca Samuttapa. And Paticca Samuttapa is say that the idea of Dwadas Nidan, 12 linkages. So, how 12 linkages can be helpful to attain you Nibbana, that is enlightened, or how eightfold path or Char Arya Satya, that is the core of the Paticca Samuttapa, can be helpful a laity to achieve the good life in this world and to earn the heaven in the after this life. So you can see that how this core philosophy was implemented in the art form. And the first is that, you see, now, so you see that 12 linkages. So very first, you have to learn the Dwadas Nidan, 12 linkages. Very generic art form that was given is a wheel, that you see that life cycle, that is from Jara Maran cycle, what we call it, that is life cycle. So this you can say found it that we call it Bhava Chakra. So the Bhava Chakra's 12 linkages were simply represented by a wheel having 12 spokes.
Very important, another important thing is for attainment of the Nibbana or Arhatship, you have to break this cycle. So you follow it from 1st to 12th. Philosophically, we call it Vibhanga tradition, Vibhanga. And then you have to learn it through reverse cycle, means 12 to 1. So the total cycle became 24, we call it Nirodha tradition. So Vibhang and Nirod cycle totally represented in the art with 24 spokes, your national flag symbol. So you just found it that how this tradition just goes up. You see that the 12th cycle representation, that is one of the main epitome of the Nalanda temple number 3. And you found it, the 12 spokes representation in the Sarnath capital, that is our national emblem. So you just found that how thought process, how philosophical process disseminate the art culture. We are not knowing it, but we are passively or actively following it, embracing it, adopting it, because almost, but it's embedded it totally in the philosophical route that was provided by our earliest teachers. पहली वाली slide पहले ले आओ. And you see that it is not only this slide, it is not only for the teachers, it was only because it is very mystical, mood subject hai. You have to just disseminate this idea to commoner, साधारण लोगों को भी समझाना है उसको. So a different kind of traditions was adopted कि कैसे प्रतिष्ठित समुत्पाद का फार्मूला चलेगा, एग्जिस्ट करेगा. And for that एक उन्होंने क्या किया, एक प्लेट बना दी, जैसे अभी स्लेट बनती है, दैट स्लेट बोथ फार्मूला उन्होंने विभंग एंड निरोग ट्रेडिशन में रख दिया कि आप उसको मेमोराइज करोगे. मे बी ये फॉर द यंगर जनरेशन स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ द monk, what you call the shamaner, are the people who are interested in the common learning. Many people who don't know the subtleties of the philosophy, so क्या किया, that formula was written in a seal or on a paper, एक स्तूप बनाया, उसके अंदर पुश कर दिया उसको और कहा कि you don't have to recite, finally you have to put as a votive stupa when you are going to a stupa or temple or something like that. And so you will learn that you have learned the ए धम्मा हेतु प्रभया, आपको पतिच्छ समुत्पाद का फार्मूला आपने पढ़ लिया, ऐसे मान लेते हैं. किसी और ने कहा कि हम इतना भी नहीं जान सकते, इतना भी नहीं कर सकते. सबसे पॉपुलर थीम है, अच्छा नहीं जान सकते हो तो हम एक ढोल टाइप का प्रेयर व्हील बना देते हैं, उस पे फार्मूला लिख देते हैं, तुम जाना मंदिर, उसको घुमाते रहना खाली. तो फाइनली दैट प्रेयर व्हील मोस्ट पॉपुलर यूसेज है. अब एक बार घुमाओगे तो एक बार रिसाइट कर लोगे. तो किसी ने कहा कि कैसे मंदिर रोज रोज पे नहीं जाते हैं, तो कहते हैं हम उस ढोल को छोटा सा बना देते हैं, तुम पंखा हिलाते रहो ऐसे, एक बार में एक पतिच्छ समुत्पाद. सो हाउ आर्ट फॉर्म मूव्स ऑन. You see the example, that plate, one of the most important basic learnings medium plate that is found from Nalanda, Lauriyanandangarh, Kushi. This plate is I am showing from Nalanda. So you see, again you see that here is the formula. That is seal is just put here. That formula you found it that how a seal is put, you have to put a totem. वो नहीं जानता है भक्त कि उसने क्या लिखा है, उसको पुण्य कमाना है फाइनली, so he put it that. Again, that prayer wheel, आप कहीं भी देख लो बुद्धिस्ट टेम्पल में लगा है, आप जस्ट इसको हिलाते रहिए. महायान, अभी उसको बाद में आऊंगा, taken it into further level of the philosophy by drawing the mandalas. तो फोटो देख लीजिए, अभी वो आगे आएगा. So you see that how that art form developed, and it is not only India. These art forms conquered at least whole Southeast Asia, whole Asia, East Asia, and majority part of the Central Asia. You see, Mongolia abhi bhi wahi hai. So you find it that how it's a silent culture that is running through the art finally has such an emphatic impact on the world. You just can see from just here.
Again, सेकेंड एस्पेक्ट में इसको आता हूं फिलॉसफी के, दैट इज, एक बार ले जाओ, नहीं आगे आगे और आगे, दैट इज स्तूपा कल्ट. On there is a much debate how stupa cult came into practice. It is said that in very first year of the Buddhahood, generally Tapassu and Bhallik, two lay follower, came. He was sitting after the Nibbana in the Bodh Gaya near his Bodhi tree, and finally they met him and he said, they offered the food, and then Buddha, they says that we are the merchants, we are going to our country. Some says from Orissa, some says from Myanmar. So he says that how can you worship it? So Buddha says that I was giving you idea how we make the stupa. So one of the scholars section says that the stupa was first time built by Buddha himself in very first year of Buddhism. But how it really evolved, that is you found it in the Mahaparinirvana Sutta, when Anand asked that you are going for the Mahaparinirvana, then how you what you want? So he says that I need a funeral ceremony like a king, because I am a Dhamma Chakravarti, and after my death my relics should be distributed and the stupas should be built for on important places of the India. That is historical things, but real thing is that how a stupa was built, what was its purpose, and what was its philosophical content in it. So two very important points. Earliest stupa worship was not for the monks. It was exclusive domain of lay people, commoner. Monk can perform the worship, but he cannot share merit by worshipping the stupa. Second is that what is the Buddha? What is the purpose of the stupa worship? So John Strong's work is very important. He says that Buddha was the greatest anthropologist of his time. He knows that I am aging, after my death, how religion will learn. So he has some kind of a religious ideas that he want to incorporate. So he says that stupa was basically idea in which he says that my relics is considered to be jivita. Means though Buddha is mortally not present, but the Buddha's body, that is, means the relic that is embedded in the stupa, can be accepted as a living Buddha. So a lay people can come and worship the stupa as a living Buddha. So very important thing. So it says that here Buddha, two very important ideological things he evolved. One was his known as Dhammakaya tradition, and other was known as Sharirkaya tradition. That it came in the third, that it came in the period of the Vajrayana. So what was the Dhammakaya tradition? That was his teachings. And what was his Sharirkaya tradition? That was the stupa. So stupa, finally you just found it, became a very important source to disseminate his ideas, his teachings, you find, and later on you can say in early centuries, finally this teaching, this idea got merged and the monk became the main worshipper, despite denial of the Buddha of the stupa tradition. So this is also just a very important thing. And the question was that after absence of the Buddha, stupa was one of the very important thing, and initially idol worship was not existing. So how you can worship the Buddha? So he initially aniconic, means non-anthropomorphic ideologies and symbols evolved, and slowly it was evolved in the idol worship or image worship of the Buddha. So it was giving very important thing. What is the philosophical content in image worship? Very important thing is in the Brahminical tradition,
image is considered to be जीविता. जीविता means sacramental. उसको मंदिर में रखा जाता है, उसको sacrament किया जाता है, उसको live किया जाता है. In Buddhism, the image was a symbolism to learn his philosophy and his way of life. It is not a jivita basically. In later Mahayana tradition, it came into just periphery of the jivita. Initially, it was a symbolism. So you see that anachronic structure, how it evolved, and later on it became a very symbolic structure to display this teacher. And you see that one of the first art, I am giving example of the Sanchi, you find it, there is a throne in between. It is an empty throne. There is nobody is sitting. So the empty throne is symbol of the Buddha, you will find it. And then final evolution. Buddha's the final evolution that was represented from the Kurki Har. It is very near to Bodh Gaya. And final evolved into Thailand through Dwaravati art. That is the final, that you call it Buddha. That I have first slide I have shown it, that you can do walking meditation. Here is a walking meditation. Buddha is walking. You see that his feet. And so you just find it that it is the beginning, first aniconic structure, to finally you can say that iconic structure that is evolved finally you say. So it, almost 1600 years, how art form changed by having the single, you can say, thought process, that how you worship the Buddha, how you just accept his teaching, finally you see it can be represented into the different forms. That's what out. And you see that when it finally just changing different art forms, how it came. Then multiple Buddha ka concept aaya Mahayana mein. It is known as Sahasra Buddha. And this Sahasra Buddha conquered the whole Central Asia. One of the most important representation found it not in India. It is found in the Dunhuang caves. Supposed to be one of the most important, wonderful sites of the world that attracted one of the largest chunk of the tourism all over the world. But despite very hazardous geography, you just find it. So, and each panel of the Buddha is in the different tradition. One panel may be in the Dharma Chakra Mudra, other is into the Bhumishwas Mudra, third is into Abhay Mudra. So you see that it is not a symbol that aapne usko chhap diya. Every row has a different slice of the philosophical angle. So that is very important. And again, how two parallel traditions, idol or image traditions and aniconic tradition goes parallel. And you find that this is Stupa. Buddha is represented with one umbrella. It is simply, see one umbrella. Piche le jao slide Babu. Sanchi. Here you cite that three umbrella. So it is the three, the Buddha, Dhamma and Sangha. So three representation. When three umbrella, it's a three. Buddha, Dhamma and Sangha is represented. When you found it that single umbrella, this is almost only Buddha is represented. So you see that how aniconic and iconic tradition both mingling parallel and experimenting to, you can say, invite a better standing of the Buddha's teaching. Another aspect that comes is that seals Yulong. And in this, basically, my teacher's contribution is supposed to be most eminent Professor K.K. Thapalia, and he says that Buddha himself remodeled, you can say, the Sarnath symbol that you call wheel and deer device with, you can say that with the inscriptions that he found it was direct borrowing of Indus seal found from the Lothal. So he says that directly that it was, and finally that seals became a very important, you can say, things that came into the picture. Another aspect that art form that is most represented in the world is the Jatak stories. ये बहुत भ्रांति है. जनरली आप पूछो व्हाट इज जातक क्या है, अरे बच्चों को सुनाने के लिए कहानियां थी. In Buddhism it is not. Till 2nd century
we have the idea that these kind of stories is specifically for the monk tradition. Before it was taken into the art form, it was totally dedicated to monk traditions. Two wonderful works, if you want to just consult, is Naomi Appleton's work on Jatakas and Vidya Dahejia's work on, you can say, representation of the art. You find it 95% Jataka stories was told by the Buddha to the monks or nuns, either individually or into the group. But if first experiment, I am giving one example, that was taken by star, just medallion found in the Sanchi and Bharata Stipa, mentioning only one, that is the Chhadant Jatak. It almost changed the idea of dissemination of the Buddha's teaching, and to which group, either monk or lay people. You see that if Jatak stories was exclusively for the monk, it was disseminated into the stupas of Sanchi and Bharhut, and if stupa worship was the lay follower, then the question was, now ideology is changing. Now Jatak became not exclusive domain of the monks. It became the domain of the lay people as well as, and other thing also, the worshipping domain is also changing. Now stupa worship is not exclusive domain of the laity, but also for the monks. So you see that how art also instrumental to change the socio-economic and religious structure of its time. So very important thing, that is thing. And other very important aspect, that is my own work that I have published and is much appreciated, that is पहले पीछे ले जा ना आगे और ले जा बस. That is how it is said that Buddha was not idea of the divinity and just aloof from, you can say, kind of the existing worshipping. But now when you just going that the learning idea that how Buddha has some kind of, you can say, belief into traditional worshipping system that he clearly did not exhibit his lifetime, but from his burial traditions and his literary traditions, seed of it was found, and finally it was evolved in the latter traditions. Very first is that sansara, that he says it is web of, you can say, dukkha, and so how you can get rid of this web of dukkha, he has just given his teaching. So the visual representation of the sansara that was found just after his Mahaparinibbana in his Piparahava relics, and that you find pehle wala. That is golden plate, wavy lines that exhibit the sansara. And how you can move out of this web of the sansara, he himself is the model, but he probably also taken support of someone, and who was no other than that lady whose name was Mahamaya. Though Mahamaya died just after birth, after a week of the Buddha, but Siddhartha and Buddha never left Mahamaya. His divine presence was everywhere when you go through the Buddhist literature. वो wandering करने निकले और वो बेहोश हो गए. Finally मदर ऊपर से चली आई कि तुम तो कह रहे थे बुद्ध बनोगे, तुम तो लोग कह रहे हैं मर गए. बोला नहीं, मैं जिंदा हूँ. When he became enlightened, finally she became very happy and wandering from the heaven. My son became the Buddha. When he became a greatest preacher, he was sitting in the Sravasti. He said, "You preached all over the world. हमको क्यों नहीं preach किया?" He directly went to heaven, and from Sankasya he just returned. It's very, very important art form that came. And it is said after the Mahaparinibbana, one of his disciple finally went to heaven and informed कि बुद्ध तो चले गए. She returned finally and started crying. वो ऊपर थे,
लौट आए, हु इज शी, आनंद से वहीं से पूछा, बोला ये तो अम्मा आ गई हैं. He returned, preached and taken. It is the first evidence of idea of resurrection in any religion. Christianity तो बाद में आया, probably यहीं से अडॉप्ट किया उसको. So you just found it, this kind of things. So, and its visual representation is found in पहले found in just mother is sitting in the plate Piprahavad with his body relic, gold mother goddess. It is not only from Piprahavad, it is also found where you found the original relic. Lauria Nandangar se bhi mil gaya hai. So he found it mother sitting. And so, who is she? Who is she? She is represented by this farm. And you know, Hindi में इसको क्या कहते हैं? What is this? तारा. So तारा, वो लेटी हुई इस हाथ में, and that Tara became chief goddess to remove the hurdles of the mass. Astamahabhaya. That was first time evolved in Nalanda. Probably this is the first image of the Tara. Probably that is found in Nalanda, and some of the very important people have says that probably Tara cult was evolved out of it. I am saying this, and many others says that from out of this Tara worshipping that is found from the Piprahava cult. Very 5 minutes I will take. Mahayana I have just touched it, not going to that. Mandal I have just also told you, and Mahayan and Vajrayan iconography stormed the world through its visual representations. World's best images, best symbolism that is found belong to either Mahayana or Vajrayana tradition. How cosmopolitan structure was taken and given the anthropomorphic tradition of the art will give you 2 examples only, and then finally will in my lecture taking too much time. And that was first, you see, who is he? अगर आप सीधे देखोगे तो कौन है? नागराज हैं, लेकिन नागराज नहीं है ये. This is the replica of Nagarjun Hiranand Shastri's aspect. That is very important. एक हाथ में वो प्रज्ञा पारामिता की कॉपी लिए हैं. Mahayan tradition says that all important text is last and then finally taken by Nagaraj in the Patal Lok. So Nagarjun was born. He went to Patal Lok and requested Nagaraj to take his copy, and finally he was represented as Nagava. It is one of the best idol of Nalanda preserved in the Nalanda museum. So Nagarjuna itself was represented as Nagaraj. One of the way, and having the book, you can say that having the source of all the material. Other thing, what is the source of his that he's taken? That source was taken. It was again represented by Nagi. That was discovered 2 years back. I was first time using this photo. That is right one in my Nalanda book. I have just used it. And she is none other than having another book you can say in a hand. That is Pragya Paramita. So it says that the most popular goddess along with Avalokiteshwar of the world, you can say, if you just, she stormed the whole China, Korea, Japan and Central Asia through her visual representation. And she was represented through her manuscripts. Pragya Paramita Sutta is considered to be the most popular book of Buddhist world in this contemporary age. So it was not only to read, not only to learn, but it was also mode of worshipping, visual representation. कैसे पता चलता है कि किताब पूरी जाती है? उसके कवर पेज पे सिंदूर लगा है. So finally that gives you idea that it is worship, and that worshipping finally just give you that idea. And in India,
We have, it is said that 5 million manuscripts in Nalanda, but in India, we have a single copy that is in the Varanasi, Bharat Kala Bhavan, Pragyamata Sutra. I am showing the first page of that. You can say, just that I have requested and they have provided me copy. You see that how visible representation of, it is the only book, Daf Nalanda, that you have. Very unfortunate for all of us, but it is, though we have almost 50,000 manuscripts all over the world of Nalanda, but till in India we have the only one, original one. So you see that how, so all this happened with one motive, and that motive was basically still core of the Buddhism and still core of the word, that is Bhavatu Sab Mangalam Rakhantu Sabba Devata Sabba Buddha Mahabhaven Sada Sukhi Bhavantutu. That is, may all blessings upon you, may all deities protect you, by the power of all Buddhas, may you well be forever. This was Buddha's idea that was represented through art. So he is supreme and he was the best, you say that person that blessed continuously to all of us. That is the last representation, supposed to be the most sacred of the Buddhist word, Lumbini. Thank you all. Thanks a lot, sir, for such a enticing and such an enlightening lecture. Inter alia, you spoke of Buddha's teachings and philosophy finding an expression through the several art forms. At the same time, you also emphasized on the interactions between art and the socio-economic and religious patterns and structures. And you looked at the multi-structured, multi-layered, multi-dimensional aspects of Buddhism and Buddhist philosophy as well as Buddhist art. One of the interesting features which you actually highlighted was the fact that the Buddhist philosophy in itself was it did not emanate, or the teachings did not emanate out of a rupture as such, but were in fact a continuation of the knowledge traditions and the philosophies which were already existing. There were several refinements which were made in due course. Then you also segregated, and that was a very interesting feature of your lecture, where you spoke about him being intelligent and astute enough to realize that there needs to be a segregation between the art or the philosophical expression through the medium of art for the laity and for the monastery. So thank you so much for giving us so insightful thoughts. I think Anand sir deserves a huge round of applause for such a beautiful rendition. Now I'd like to request Professor Govind Singh to come on the podium to share his views with all of us. थैंक यू डॉक्टर पंकज जी। आज की इस सेमिनार की इनॉग्रल सेशन की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ प्रोफेसर हर्ष कुमार जी, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर शाही जी जो मगध विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, आज के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर आनंद जी, और मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे साथी मित्रगण और यहाँ सभा में हॉल में उपस्थित तमाम शोधार्थी, प्रोफेसर्स, टीचर्स और विद्यार्थी, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा विषय मास कम्युनिकेशन का है। मैं मूलतः एक व्यावहारिक तौर पर पत्रकार रहा हूँ
और 50 साल की उम्र के बाद प्रोफेसर बन गया, और प्रोफेसर भी मास कम्युनिकेशन का, और उसके बाद अब मैं मीडिया एडवाइजर हूँ। तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जैसा आपने भी कहा था कि भाई ये एक तरह से भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से है, आधुनिक जो विश्वविद्यालय की परिकल्पना है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, और इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। तो जैसा आपने कहा कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग IAS निकलते थे, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ आने की इच्छा हर एक जो भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, जो भी एकेडमिक फील्ड में कुछ करना चाहता है, उसके मन में एक भाव रहता है कि यहाँ आया जाए। तो ये मेरे सौभाग्य की बात है कि पहली बार इस विश्वविद्यालय में मुझे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं इस विभाग का, भाई अतुल जी का, अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष जी का, और तमाम जो भी आयोजन मंडल के सदस्य हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। विषय हालांकि कलाओं पर, बौद्ध दर्शन के कलाओं पर प्रभाव को लेकर के है। मेरा उसी से जुड़ा हुआ विषय है कम्युनिकेशन पर, क्योंकि कला और कम्युनिकेशन जो है ये लगभग एक जैसा काम करते हैं। दोनों का मकसद लगभग एक जैसा है, अभिव्यक्ति है। संचार में यानी कम्युनिकेशन में हम लोग अपने मन की बात दूसरे से कहते हैं, ये संचार है। और जो कलाएं हैं वो भी आत्मा अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का जरिया जो है वो कलाएं हैं। और वाकई बौद्ध दर्शन के प्रभाव का, प्रचार प्रसार का, फैलाव का बहुत बड़ा योगदान जो है वो कलाओं की तरफ से है। जहां तक संचार और कलाओं का संबंध है, हम लोग अपने देश के संचार की जो प्राचीनतम जो रूप हैं वहां तक जाने की कोशिश करते हैं, तो हमको भीमबेटका के गुफा चित्र दिखाई देते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आप लोग तो वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री के लोग हैं ज़्यादातर। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम के गुफाएं हैं, जिनका काल जो है वो लगभग उत्तर पाषाण काल माना जाता है। और जो गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं, जो आज भी हम लोग देखते हैं, वो जो है लगभग उनका काल जो है 10,000 से 30,000 साल तक का माना जाता है। आज से 10,000 साल पहले और उससे 30,000 साल के बीच का काल माना जाता है। तो यानी कि, और गुफाओं के चित्र बने हुए हैं, जंगली पशुओं के चित्र बने हैं, जो मारने वाले लोग हैं उनके चित्र बने हुए हैं। तो चित्रों के जरिए अपनी अभिव्यक्ति वो लोग कर रहे थे। तो हम लोग संचार की प्रारंभिक जो स्थिति है उसको मानते हैं, और उसके बाद हम सीधे सीधे बौद्ध युग में आते हैं कि कैसे जो है वो बौद्ध धर्म लगभग 550 ईस्वी पूर्व से लेकर के लगभग 1200-1300 ईस्वी तक लगातार उसका प्रचार प्रसार होता रहा, फैलाव होता रहा, और लगभग 1/3 दुनिया पर उसका एक तरह से राज कायम रहा। तो ये कैसे हुआ, और बिना कोई बहुत ज्यादा लड़ाई भिड़ाई के, जहां तक लड़ाई भिड़ाई का मामला है उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि ज्यादातर कष्ट हुआ तो बौद्ध लोगों पर ही हुआ। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई हमले नहीं किए, कोई तलवार के बल पर अपना प्रचार नहीं किया, सिर्फ जो है अपने प्रक्रिया के जरिए, अपने तौर तरीकों के जरिए बौद्ध धर्म का प्रचार 1500-1600 साल तक, आप बताते हैं कि 1600 साल तक इसका प्रचार हुआ। तो कैसे एक धर्म जो है 1600 साल तक जो है वो लगातार फैलता रहा, और आज भी एक तरह से फैला। आजादी के बाद भी जब बाबा साहब आम्बेडकर को लगा कि हिंदू धर्म में बहुत समस्याएं हैं, बहुत भेदभाव है, तो हमको क्या धर्म अपनाना चाहिए, तो उन्होंने भी एक तरह से नव बौद्ध धर्म का ही एक नया एक तरह से रूप क्रिएट किया, और उसमें दीक्षित हुए। तो आज भी बौद्ध धर्म में लोग दीक्षित हो रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी उपलब्धि किसी धर्म की है, और उसमें मुझे लगता है कि कलाओं का, संचार का बहुत बड़ा योगदान है।
तो जो संचार के हिसाब से हम देखते हैं तो खास करके 3 चीजें मुख्य रूप से आती हैं। एक तो ये है कि जो संदेश यानी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं, यानी जो यहाँ इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में हम कहें तो बौद्ध दर्शन, फिलोसॉफी, संदेश नंबर 1 है। फिर उसके बाद संदेश देने वाला है, सेंडर। आप लोगों ने ज्यादातर जो शोधार्थी हैं वो जानते हैं इस बात को कि जो कम्युनिकेशन के 3 पहलू हैं, सेंडर, रिसीवर और मीडिया। मीडिया जिसके जरिए हम पहुंचा रहे हैं, जैसे मैं इस माइक के जरिए अपनी बात को पहुंचा रहा हूं। तो कलाएं और ज्यादातर जो तौर तरीके हैं वो सब मीडिया में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संदेश, कम्युनिकेशन। जो दर्शन जो है वही सबसे बड़ी बात है। बौद्ध दर्शन में ही वो सब बातें हैं जो उसको एक तरह से ग्राह्य बनाती है, जो उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीज बनाती हैं, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और संदेश वाहक जो है, जो संदेश वाहक है, जो संदेश दे रहे हैं, वो कौन है? तो सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध जो है वो स्वयं एक अद्भुत संदेश वाहक है। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के एंगल से बौद्ध धर्म पर बहुत कम काम हुआ है, लेकिन बाकी देशों में बहुत काम हुआ है। तो उसी में से एक विमल दिशा नायके नाम के सज्जन हैं, जो श्रीलंका के विद्वान हैं। तो वो कहते हैं कि बुद्ध को वो श्रेष्ठतम कम्युनिकेटर है। बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को बोलते हैं कि वो श्रेष्ठतम, दुनिया के श्रेष्ठतम जो है वो कम्युनिकेटर हैं। ऐसे ही गांधी जी को भी हम लोग बोलते हैं कि वो एक हमारे समय के महानतम जो है कम्युनिकेटर है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद को हम लोग बोलते हैं कि एक महान कम्युनिकेटर है। शंकराचार्य को अद्भुत कम्युनिकेटर की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो वो बुद्ध भी बहुत ही बड़े कम्युनिकेटर एक तरह से थे। उनकी अद्भुत विशेषताएं हैं उनकी संदेश देने की। तो सबसे पहला जो तरीका है, कंटेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है। दर्शन जो है, कंटेंट इज द किंग कहते हैं आजकल अपनी पत्रकारिता की भाषा में हम लोग। तो कंटेंट ही सब कुछ है। तो उसमें उसकी जो विशेषताएं हैं गिनाई गई है बौद्ध धर्म के हिसाब से, वह है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब आप लोग जानते हैं, सत्य, दया, मदद का भाव, समयोचित वाणी, ये सब गुण जो है उसमें होने चाहिए। इसके बाद है माइंडफुलनेस, सजगता। मतलब आप जहां पर हैं वहां सजग हैं, ध्यान से, पूरे दिमाग से, आप दिलो दिमाग से उसको सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। करुणा, करुणा जो है बौद्ध दर्शन का बहुत ही मूल है। महादेवी वर्मा इसी इलाहाबाद नगर से निकली और महान कवित्री हमारे समय की हैं। तो महादेवी वर्मा जो है वो कहती थी कि करुणा जो है उनके जीवन का सार, और उनके काव्य का जो है सार जो है वो करुणा ही था। तो और बौद्ध धर्म से ही उन्होंने करुणा जो है वो ग्रहण किया। शील, नैतिक आचरण, सक्रिय श्रवण, श्रवण पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। जो सुनने वाले हैं वो ध्यान से सुने। ये नहीं कि मतलब हम लोग जो है कुछ और काम कर रहे हैं, मोबाइल पर काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं भाषण, ऐसा नहीं। सुनना है तो सब कुछ सुनना है, पूरा माइंडफुलनेस के साथ, हार्टफुलनेस के साथ सुनना है। खुद को सुनना और दूसरे को सुनना। मौन जो है, मौन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के का जो एक बहुत ही आज की जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग विपश्यना करने के लिए जाते हैं। सत्यनारायण गोयनका हमारे जमाने के एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। तो उन्होंने विपश्यना की स्थापना की और आज भी देश के अनेक कोनों में विपश्यना के कैंप लगते हैं, जहाँ 10 दिन तक मौन रह करके आपको ध्यान लगाने की विधि सिखाई जाती है। तो वो कहते हैं कि मन तो बंदर है, उनका बहुत प्रिय डायलॉग है, मन तो बंदर है। तो मन वाकई आप मेरी बेटी ने वो कोर्स किया था 10 दिन का, तो बताती थी कि पहले 2 दिन जो है ऐसा लगता है कि वास्तव में मन जो है बंदर भटकता रहता है, एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर। वो
स्थिर नहीं होता। और मन को कंट्रोल करने, यदि आपको अच्छे संदेश वाहक बनना है, अच्छे कम्युनिकेटर बनना है, तो पहले आपको अपने मन को जो है वो कंट्रोल करना होगा। तो मौन का बहुत महत्व जो है बौद्ध धर्म में है। सम्मान जो है वो श्रोता का आदर, श्रोता जो है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये नहीं, मैं आपको ये नहीं समझ सकता कि आप जो है वो अयोग्य हैं, अज्ञानी। आपका प्रॉपर जो है सम्मान मुझे करना चाहिए। बहुत सारे हम जब भाषण कला के बारे में सीखते थे तो लोग कहते थे कि समझ लो कि सामने वाले मूर्ख हैं। ये आधुनिक जो हमारी जो कला है अंग्रेजी पद्धति की, उसमें ये सिखाया जाता है कि आप समझ लो कि सामने वाले मूर्ख हैं। ऐसा नहीं, बौद्ध धर्म में सम्मान जो है वो श्रोता का परम सम्मान अनिवार्य है। प्रक्रिया उन्मुख संचार, ऐसा संचार जिसमें प्रोसेस के तहत हो, यानी सचेतन, जागरूक और नैतिकतापूर्ण। मतलब उसको ऐसे ही नहीं कि मतलब कम्युनिकेशन का मूल एक तरीका है। साझा भाव, सामूहिकता का भाव। जो बौद्ध विहार है, महाविहार है, वहां सामूहिकता का भाव होता है। तो जो बातें मेरे लिए अनिवार्य है वही सबके लिए है। सामूहिकता का भाव जो है वो बहुत जरूरी है। धीरे और स्पष्ट बोलना। आपने देखा होगा कि लोग बहुत धीरे बोलते थे, धीरे बोलते हैं और बहुत ही क्लियर कट स्पष्ट बोलते हैं। बहुत आप धर्मशाला जाइए तो आपको बड़ी भीड़ के बावजूद बहुत शांति नजर आएगी। मैंने स्वामी रंगनाथानंद जी रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े संत हुए हैं। स्वामी रंगनाथानंद जी का भाषण आप सुनाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे बोलते हैं और एक एक शब्द को तोल करके, ना तोल करके बोलते हैं। तो ये सच्ची मतलब संचार की कला, कम्युनिकेशन की कला है। शांति, आपने भी बताया कि शांति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीस और शांति जो है वो है। इसी तरह से जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स की बात हम लोग करते हैं आधुनिक रिसर्च में, तो वो जो है उसमें यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म का प्रचार यात्राओं के जरिए हुआ। ऐसे ही सिख धर्म का प्रचार जो है गुरु नानक ने यात्राएं करके अपने धर्म का प्रचार किया। वहाँ अरब से लेकर के बर्मा तक, थाईलैंड तक जो है गुरु नानक अकेले यात्रा करते रहे और उन्हें अपने धर्म का प्रचार इस तरह से किया। ऐसे ही बौद्ध धर्म के लोगों ने भी यात्राएं की। जिस जमाने में परिवहन के साधन नहीं थे, उस जमाने में भी उन्होंने भारत से लेकर के तमाम जो है देशों की यात्राएं की और उनके अनुयायियों ने और भी ज्यादा यात्राएं। भिक्षुओं का बड़ा भारी योगदान है जो यात्राएं बहुत करते हैं। चित्रकला, जिसकी बात प्रोफेसर आनंद जी कर रहे थे, चित्रकला का बहुत बड़ा योगदान है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। मूर्तिकला जानते हैं कि अभी तक भी मूर्तियों के लिए बौद्ध धर्म विख्यात है। हमने देखा कि किस तरह से बामियान में 2001 में तालिबानियों ने बौद्ध मूर्तियों को जो है ध्वंस किया था और पूरी की पूरी पहाड़ियां जो है वो पहाड़ियों पर जो है मूर्तियां बनी हुई थी। लेटे हुए बौद्ध की, बुद्ध की और बैठे हुए बुद्ध की। गुफा चित्र जो आदि स्वरूप है कम्युनिकेशन का, गुफा चित्र जो है, शैल चित्र जो है, वो भी बहुत जरूरी है। स्तूप और स्मारक, उनके जरिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और महाविहार और बौद्ध विहारों में शिक्षा के जरिए दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसी तरह से शिलालेख। और सबसे बड़ी महात्मा बुद्ध की विशेषता ये है एक कम्युनिकेटर के तौर पर कि उन्होंने उस समय की प्रचलित शास्त्रीय भाषा संस्कृत को छोड़ करके जो बोलचाल की भाषा थी, प्रचलित भाषा थी, प्राकृत मागधी प्राकृत को अपनाया और जिससे आम जन तक बौद्ध धर्म फैला। जो केवल जो है उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग की भाषा थी, उसको छोड़ करके वो जो है जनता के बीच में आया। और भाषा जो है वो सबसे बड़ा टूल होती है कम्युनिकेशन में। तो मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध ने उसी को अपनाया और एक तरह से सच्चे जनतंत्र की स्थापना की। जनतंत्र का भी स्वरूप हमको वहीं से दिखाई देता है, क्योंकि
लिच्छवी गणराज्य को सबसे पुराना जनतंत्र का बताया जाता है, जहाँ जो है वो जो सामूहिकता का भाव है, जो खास करके मोहल्ला सभाएं और तमाम गलियों में, चौक चौराहों में जो सभाओं के जरिए फैसले होते थे वो हो रहे। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है वो संचार के जरिए दुनिया भर में फैला और आज भी फैल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने संक्षेप में अपनी बात रखी है और बातें बहुत हैं, लेकिन चूंकि इसकी मर्यादा है सीमा की, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। I mean, whatever he communicated with us, I believe we would not have found a better person, a professor of mass communication, to talk about a mass communicator like Buddha. He highlighted on several aspects, and he, through the means of talking about the different aspects of modern communication, he drew an analogy and tried to look at Buddha as a communicator from fresh perspective, in a fresh light. And one thing which he emphasized in a very subtle manner is that तानसेन होने से पहले कानसेन होना जरूरी है. You need to be a good listener to be a good communicator. So we thank him for such valuable articulation and thoughts. Now I like to, if I may take the liberty of calling her our own, Professor Anamika Roy, the former Dean Faculty of Art, the former head of the department, Ancient History, Culture and Archaeology, to address the gathering. Thank you, Dr. Pankaj ji. Namaskar. Sitting on the dais, Professor Sahi, Professor Anand Singh, Professor Govind Singh, Professor Harish Kumar, Dr. Ramakant, Dr. Atul, and sitting at the other side of the dais, I can see Professor Dubey, Professor Sahuji, Professor Pal, Professor O.P. Srivastav, my young faculty members, research scholars, and students. Professor Anand Singh ji, in his keynote address, has done full justification with the subject. When Dr. Atul told me about this theme, I found it very difficult. How can one talk about Buddhist philosophy expressed in Buddhist art? Most of medicine scholars who approached me for the theme, they took it for the religion, but Dr. Atul and Professor Harish and Dr. Ramakant ji have chosen an excellent and very suitable resource person as keynote speaker who has covered all the aspects how Buddhist philosophy is expressed in Buddhist art. And he has done my job very easy, I must say. Because now I am at liberty to say whatever I would like to say. He has covered everything. And being a historian by training, I will talk about different problems, different debates, which have been taken by different scholars from time to time and which are still pondering the minds of several scholars. My relation with Buddhist art begins with 1986 when I was doing research on Amravati Stupa with Raymond Olchin, Cambridge University. But
In 1998, I started invoking the goddess. So I am thankful to the organizers of this seminar for bringing me back to my PhD thesis topic. For early Buddhist art, usually the early scholars use the term narrative art like Vidyadehejiya, Pratapadiत्य पाल। पहले जिन लोगों ने विद्यार्थियों के लिए पहले जिन लोगों ने काम किया था विद्यादेहेजिया, प्रतापादित्य पाल, उन्होंने जो early Buddhist art, they use the term that it is a narrative art. They took stones as a storyteller, and stones are the great communication of Buddhology. What is Buddhology? It is a new term coined by Western scholars for Buddhist tenets and Buddhist philosophy, like Indology. Now we have Buddhology. The question has often been raised regarding the donors, monks, and the funding agencies for the carvings of early Buddhist art. If we see the shades of Buddhist tenets, Buddhist philosophy, Buddhology, so we have to read the mind of the artist. The artist has not only carved the Jatakas, the Jataka stories. Professor Anand Singh has referred to it, how Gautam Buddha found it necessary that the monk should also know about the Jataka stories. But they also carved Buddha Charit, Saundaranand, and Lalit Vistar. So, can we read the mind of anonymous artist? Is it true? Like it is raised by several scholars that Buddhist past slumbered in amnesia. I disagree with it. It was not amnesia, but it was a wrong lens to look at the early art. First, I will address the problem of depiction of a particular yakshani known as, it is labeled there, Sirima Devta. It is here in the museum. It is a very popular depiction. And the depiction of yakshanis was as popular in Buddhist art as it was in Jain art. The scholars of the Buddhism must be wondering, while talking about Buddhist philosophy, why I'm taking yakshanis. I will come to it why this Sri Mahadevta is so important to understand Buddhist tenets on the stones. Sri Mahadevta Yakshani, first of all, Kumaraswamy has discussed it with a group of yakshanis, and this yakshani was just shrugged aside as a number of yakshanis carved on the stones. But some of the scholars took it the other way, and this is the beauty of our past, ancient history, and Buddhist art. V.S. Agrawal takes it as Siri
माँ, ये तुमको अच्छा ठीक है, यही दिखाते रहो अभी, Siri माँ, and he takes माँ for Lakshmi in Prakrit. He says that the figure at Bharhut, labeled as Siri Ma Devata, appears to be a representation of Siri Ma or Maya and Devta for the same goddess. And who is this Maya? Is she an illusion? A goddess named Maya is mentioned in Shatapat Brahman as Asura Vidya. Maya is Prakriti illusion, and V.S. Agrawal associates with the Shakti of Asuras. How come that Shakti of Asuras found expression in early Buddhist art? Some scholars find that in the Buddha Charita, when Ashwaghosh says, Mayeva Devi Devata, a goddess in heaven is called Maya, he is referring to Maya Devi, whether it was Buddha's mother or a goddess who is devoid of the vices of anger, ignorance and deceit. Who was this Maya depicted on the stone by the early artist? Who was the monk or the upasak who paid money for this enigma in early Buddhist art? E.S. Johnston, on the basis of papyrus of the 3rd century CE, says that invocation to the Isis, and she is identified with other goddesses of the world, and in that list a Maya is mentioned as Maya in India. And this Maya or Siri Ma Devta, was she Lakshmi, Ma, Maya, or Maya Devi? Who was she, carved on the stone in the 2nd century BCE? Then comes another argument, other group of the scholars, and the recent scholars on the basis of Buddhist text, Shri Dhamma Attakatha says that there is a narration, no, not on the basis of Shri Dhamma Attakatha, yes, on the basis of Shri Dhamma Attakatha, they say that there is a narration of a courtesan who did so much of charity that she became a deity, she was deified, and that Ganika, that courtesan deified as Siri Ma Devta, is now on the railings of Bhavan. So, that Maya, Siri Ma, whether she was Maya, whether she was Maya Devi, whether she was illusion, whether she was Lakshmi, and above all, whether she was a Ganika, who on the basis of charity became a female deity
as Siri Ma Devata, and this other school, it is supported by Vidya Dehejia, Upinder Singh and Seema Bawa. She was a Ganika and found expression. She was carved on the railings of Bharat. Yet there was another courtesan, Utpal Varna, who eventually found arhatship by becoming a pious nun and was second only in the hierarchy of the Buddhist nuns. Buddhist nuns order of Mahaprajapati. She is given the title of Agrashravak of the Buddha as Mahamodgalaya. She, इसको जरा आगे करते जाइए तो वो, yes, आगे बढ़ाते जाइए, और 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 yes. She was the first one to receive Buddha when he was descending from Triyatrishma's heaven. It was the heaven when, after attaining enlightenment, Buddha went over there to preach his mother, and she was the first one. Here Buddha is descending, and as a nun she is receiving. She was the first one. So what was the Buddhism? What was the Buddha's philosophy? What was the Buddhology? Where we find two such glaring examples from the stones, attaining not only divinity but also arhatship. Now I'm coming to the question of depiction of shouch and ashouch, auspicious and inauspicious. अब आ जाइए, चलते जाइए, पीछे की ओर चलते जाइए। तो बस ये यस, इसको थोड़ा, चलिए ठीक है। भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय कला में अशौच के दृश्य को नहीं दिखाना चाहिए प्रोफेसर दुबे जी, in Buddhist art, we find the depiction of death of Buddha as well as birth of Buddha. Was it a challenge to Sanatan Parampara? Professor Anand Singh has also referred to it in a different way, whether it was a challenge to Sanatan Parampara, whether it was a challenge to Brahmanism, or it was something different in Buddhology. ये गौतम बुद्ध का निर्वाण का दृश्य है जो प्रायः दिखाया जाता है, और यहाँ इलाहाबाद म्यूजियम में तो उनका फ्यूनरल चिता जल रही है, गांधार आर्ट में उसका भी दृश्य है। आगे ले भैया, तो और आगे, yes, please. And the birth of the Buddha, not going into the details, but why the scenes of a shouch were carved in the Buddhist art. I have earlier said, being a historian, I will raise the problems. This is the duty of a historian, and a cunning and shrewd historian always raises the problem and hardly gives the answer. But I am trying to give the answers also. Now, like Professor Anand has also talked about iconic and aniconic art, these terms had become outdated, obsolete, aniconic and iconic art. And थोड़ा सा इधर ले आना, आगे लेके भी, और आगे, बस go. If we look at the symbols, Bodhi Gaya, empty throne, wheel,
Professor Singh has in a very genius way talked about the symbols. Usually, the early scholar took as the symbol of the Buddha that Buddha was not represented in the human form, so the symbols were there. Now, the question is whether empty throne, Bodhi tree, wheel, they represent the symbolic form of the Buddha. Professor Anand has said that in Brahmana Dharma, image was Jivika, and in Buddhism, image was symbol. So whether they were symbols of the Buddha or they represent that episode, that incident, enlightenment, Mahavim Vinishkrama, Dharma Chakra Pravartan, whether they were symbols of the Buddha or they were indicating that incident, or these were indicating those places, because I think Atul has worked on it, because these places were very auspicious to Buddhists, whether they were upasaks or they were monks, they were places, they indicate those places or they indicate those incidents, those episodes, or they represent Buddha. Actually, Buddha, it is always said that iconic and aniconic form, this, that. How come Buddha's human form into existence? Thank you. The human form of the Buddha may be a matter of debate, but in Mathura and in Gandhar, at both the places, Sarvastivadins were very affluent. And there's a story in Divyavadan, not Divyavadan, in Ashokavadan, that Acharya Upgupta, what he did, उन्होंने मार को, अपने मार जो कि बुद्ध की तपस्या को भंग करता था, अपने पुत्रियों की सेना भेजकर उसको वश में कर लिया और मार से कहा कि तुमने गौतम बुद्ध का रूप काय, उनका वास्तविक स्वरूप देखा है, मैंने तो उनका बस धर्म काय देखा है, तुम उस रूप में मेरे सामने आओ। मार अशोकावदान में कथा है और यूजुअली माना जाता है कि ये अशोक के कॉन्टेम्परेरी थे। मार जब गौतम बुद्ध के रूप में आ रहा है तब उपगुप्त उसकी उपासना कर रहे हैं और कह रहे हैं इस रूप से तुम्हें अब हम नहीं जाने देंगे। तो ये कहां यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य रूप में गौतम बुद्ध का प्रदर्शन होता था अथवा नहीं होता था। दूसरे दिव्यावदान में कथा आती है कि अजात शत्रु अपनी मृत्यु शैया में इच्छा करते हैं कि वो गौतम बुद्ध का दर्शन करना चाहते हैं। दैट वाज नॉट पॉसिबल। जिस चित्रकार एक कर्टन, एक पर्दे के उस पार गौतम बुद्ध का पेंट बनाता है चित्र, और इस पार अजात शत्रु से कहा जाता है गौतम बुद्ध उस पार खड़े हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है पुनः उत्पल वर्णा की,
जब गौतम बुद्ध, when he comes, descends from the heaven, then Utpal Varna tells him that whether Subuddhi has seen his रूप का है, क्या उन्होंने उसका, उनके रूप को, उनके शरीर को देखा है वास्तविक. Then Gautam Buddha scolds Utpal Varna and says that Dhammakaya is more important than Janmakaya. जो धम्म का स्वरूप है उनका वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इस मॉर्टल उसके. प्रोफेसर आनंद जी ने भी इस बारे में चर्चा की थी. So these were some issues of Buddhology which I wanted to put before you, and the last but not the least was the question of sectarian development. Monastic and majority donation की बात आनंद जी ने की थी. The question is whether we find a sectarian development in Buddhist art. यदि उस समय के हम inscriptions पे from 1st century CE to 3rd century CE दक्षिण भारत के inscriptions को देखें तो वो अलग अलग सेक्ट्स के दान हैं. जैसे महासंघिकास का डेक्कन की केव्स में है, नासिक केव में चेतिकास का देवा, ऑल ऑफशूट्स ऑफ बुद्ध. कार्ले का चैत्य हॉल जो है वो कार्ले का चैत्य हॉल जो है वो महासंघिकास के अंडर था, और वहीं पे जो है एक स्तंभ का दान जो है वो दूसरा सेक्ट दे रहा है. महासंघिकास के ऑफशूट्स चेतियाज Amra, they were prominent in Amravati. Upper Mahavanseliyas, they were prominent in Nagarjun Konda. The renovation work was conducted by the supervisor of Chaitya sect in Amravati. So earlier when these donors who gave donation for the stupas, they proclaimed their profession, they proclaimed their native place. But now it seems that sects have become very important in Buddhism, and most of the monks who were giving donation, who were supervising the work, they were also giving the names of their sects. But we don't find any sectarian development. So these were some issues which I wanted to address. I tried to find answers, or perhaps this seminar may get the answer. The importance of Yakshinis from Maya Devi to Ganika Shrima, Ganika Utpal Varna, the sectarian development, the question of symbols, the question of iconic and aliconic art, all these issues of Buddhology, all these tenets, they found expression in art, in inscriptions, and this way they have not enhanced the beauty of Buddhist art, the religious aspect of Buddhist art, the philosophical aspect of Buddhist art, but they have also posed some questions from upasakas to historians to philosophers to answer them, and perhaps the new findings may give some other answers, and that will make study of Buddhism, Buddhist art more interesting and enchanting. Thank you. I mean, there are a few people in the audience sitting in the front rows and on the dais, which
I have to admit, without any qualms, make me speechless. To speak on your, or to even comment or say something on your delivery or rendition would be a travesty. You just extended what Professor Anand sir said, and you also raised several very valid questions which may prove to be very significant, important for the young researchers who are there in a huge number in this gathering. And she provided some solutions also. She talked about the impacts of the mind of an artist on the actual art creation. She also talked about the influences of the the thought process of a creator and the donative patterns in Buddhism, ultimately on the socio-economic structure as well. Thank you so much, ma'am, for highlighting such unexplored areas, and I do believe that they would provide valuable insights and motivation for the researchers in the department as well as other researchers. Thank you so much. Now, I'll request the ever energetic, effervescent, our former head, Professor Harsh Kumar, to please deliver his address to the audience. Please. बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। इस राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र में हम लोगों के बीच में उपस्थित मगध विश्वविद्यालय बोधगया के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर एस.पी. शाही जी, उत्तराखंड से पधारे वहां के चीफ मीडिया एडवाइजर प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, आज के इस की नोट एड्रेस देने वाले भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसर आनंद सिंह जी, विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर अनामिका जी, अतुल जी, सभा में उपस्थित प्रोफेसर एच.एन. दुबे, प्रोफेसर ओ.पी. श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर साहू, प्रोफेसर जैनपाल साहब, मेरे कुलीग्स और प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध दर्शन और उसका कला पे प्रभाव, बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड इट्स बियरिंग अपॉन आर्ट्स, विषय न केवल इतिहास और दर्शन शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु यह हमारी सांस्कृतिक चेतना और समकालीन सामाजिक जीवन के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है। बौद्ध दर्शन की मूल संवेदना करुणा, अहिंसा, अनित्य का बोध तथा मध्यम मार्ग में निहित है। बुद्ध ने जीवन को दुख में मानते हुए उससे मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। बौद्ध कला बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का एक सार्थक एवं सफल साधन था। वैदिक कालीन एवं सैंधव कालीन कला के जो उदाहरण उपलब्ध हैं, उनकी नियोजना में मानव के उन भावों का अभाव पाया जाता है जो बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है, और बौद्ध धर्म दर्शन के प्रभाव से कला को एक नया स्वरूप का आकार दिखाई पड़ता है। बौद्ध कला का दर्शन का दार्शनिक महत्व इसलिए है क्योंकि ये बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों का एक दृश्य चित्रण है जो ध्यान, करुणा, ज्ञान और अनात्म जैसे विचारों को संप्रेषित करती है। कला के माध्यम से बौद्ध शिक्षाएं और मूल्य जैसे कि दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति साधकों को आध्यात्मिक मार्ग में पर प्रेरित और निर्देशित करती है। ये कला विभिन्न प्रतीकों, संकेतों और कथाओं का उपभोग करते हुए बौद्ध दर्शन का को प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है। प्रमुख दार्शनिक धारणाएं जो बौद्ध कला में दर्शित हैं, उसमें करुणा और ज्ञान
का विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं। बौद्ध कला अक्सर बुद्धों और बोधिसत्वों को दर्शाती है, जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं, जो अनुयायियों को आंतरिक विकास के लिए प्रेरित करती हैं। अनात्मवाद की अवधारणा, आत्मा एक स्थायी व्यक्तित्व नहीं है, अपितु मानव अस्तित्व 5 स्कंदों भौतिकता, संवेदनाएं, विचार, मानसिक संरचनाएं और चेतना का एक संयोजन है। बौद्ध कला इस परिवर्तनशीलता और संघटता को दर्शाती है। अष्टांगिक मार्ग, जो बुद्ध द्वारा बताए गए आंतरिक शांति और ज्ञानोदय के मार्ग को कला के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो अनुयायियों के लिए रोड मैप प्रस्तुत करता है। शिष्य कर्म और पुनर्जन्म, बौद्ध कला में कर्म, कारण और प्रभाव और पुनर्जन्म की अवधारणा, आवागमन चक्र की अवधारणा को भी दर्शाता गया है। बौद्ध कला केवल सौंदर्य शास्त्र का एक रूप नहीं, अपितु बौद्ध धर्म के दार्शनिक गहनता और ज्ञान के दर्शाने, व्यक्त करने और प्रसार करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। बौद्ध कला का दार्शनिक स्वरूप उसके मूल सिद्धांतों और शिक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह केवल सौंदर्य शास्त्र का प्रदर्शन नहीं, अपितु बौद्ध धर्म के सार को मूर्त रूप देने का एक माध्यम है। ये कला रूप हमें बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और निर्वाण मार्ग की यात्रा पर ले जाता है। बौद्ध कला में निहित कुछ प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों की हम चर्चा कर सकते हैं, जिनका की प्रयोग कला के क्षेत्र में हुआ है। पहले स्थान पर प्रतीकात्मकता का उल्लेख कर सकते हैं। बौद्ध कला में प्रत्येक वस्तु, मुद्रा और रंग का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। जैसे कमल, ये शुद्धता, ज्ञान, निर्माण का प्रतीक है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है, उसी प्रकार मनुष्य सांसारिक बंधनों से में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। धर्म चक्र, ये धर्म के चक्र को दर्शाता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित किए गए मार्ग का प्रतीक है। बुद्ध की मुद्राएं, जो बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा का विशेष अर्थ होता है और प्रत्येक मुद्रा उनकी किसी विशिष्ट घटना या भावना को दर्शाता है। महापरिनिर्वाण, उनका अंतिम निर्माण के बारे में भी अंकन किया गया है। ये सभी चित्रण जीवन की क्षणभंगुरता, त्याग और आत्म जागृति के संदेश को प्रसारित करते हैं। निर्वाण के मार्ग का बौद्ध कला में उल्लेख हुआ है। अंतिम लक्ष्य दर्शकों को निर्वाण के मार्ग की ओर प्रेरित करता है। ये कला आध्यात्मिक साधना, ध्यान और आत्म जागृति को प्रोत्साहित करती है। मूर्तियों और चित्रों में शांति, करुणा और संतोष का भाव होता है, जो दर्शकों को आंतरिक शांति की तलाश में मदद करता है। ये कला एक ध्यान आवरण के रूप में भी कार्य करती है, जो मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देती है। कला पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा है। यदि हम स्थापत्य कला की बात करें तो सांची का महान स्तूप, सारनाथ का धर्म चक्रवर्तन स्थल, अमरावती और भरहुत की वेदिकाएं तथा अजंता एलोरा की गुफाएं इसका सजीव प्रमाण है। स्तूप की गोलाई अनंत चक्र का प्रतीक है, जो जीवन की निरंतरता और अनित्य का बोध कराती है। चैत्यगृह की संरचना सामूहिक साधना और बौद्ध संघ की एकात्मकता को प्रकट करती है। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता की भित्ति चित्रों का उदाहरण सर्वविदित है। यहाँ जातक कथाओं का चित्रण केवल कलात्मक कौशल का परिचायक नहीं, बल्कि ये लोक शिक्षा और नैतिक मूल्यों के प्रसार का सशक्त माध्यम है। इन चित्रों में करुणा, दया और त्याग के भावों को जिस मार्मिकता से प्रस्तुत किया गया है, वह आज भी दर्शकों के हृदय को स्पर्श करता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में गंधार और मथुरा शैलियों का योगदान अमूल्य है। गंधार शैलियों में यूनानी प्रभाव के साथ बुद्ध की मूर्तियां निर्मित हुई, जिनमें शांति, गंभीरता और ध्यान की आत्मा झलकती है। मथुरा शैली में भारतीय परंपरा की शक्ति और गांधीर्य का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। इन प्रतिमाओं को देखने मात्र से ही दर्शक के मन में शांति और श्रद्धा का संचार होता है। साहित्य और नाटक के क्षेत्र में भी बौद्ध चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ा। पाली और प्राकृत भाषा में चित्र जातक कथाओं ने न केवल नैतिक शिक्षाओं का भंडार है, बल्कि इन्होंने लोक कला, लोक नाट्य और कथा वाचन की परंपराओं को भी समृद्ध किया। बौद्ध उपदेशों ने संस्कृत साहित्य और नाट्य कला में भी कई नई दिशा प्रदान की है।
यदि हम समकालीन संदर्भ में विचार करें तो ये और भी प्रासंगिक होता है। आज का युग तनाव, हिंसा और भौतिकतावाद की दौड़ से ग्रस्त है। ऐसे समय में बौद्ध दर्शन और उससे प्रेरित कला हमें यह सिखाती है कि कला केवल अलंकरण नहीं बल्कि समाज में करुणा, शांत और संवेदना का संचार करने का सशक्त माध्यम है। जब कलाकार करुणा और मध्यम मार्ग को आधार बनाकर सृजन करता है तो उसकी कला मानवता के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। इस संगोष्ठी का ध्येय भी यही होना चाहिए कि बौद्ध दर्शन और कला के अंतर संबंधों को गहराई से समझे और उन्हें आज के जीवन में प्रासंगिक बनाए। या विमर्श केवल अतीत की उपलब्धियों तक सीमित न रह जाए बल्कि वर्तमान और भविष्य की सांस्कृतिक दिशा के लिए प्रेरणा बने। अंत में मैं आशा करता हूं कि संगोष्ठी में प्रस्तुत होने वाले शोध पत्र और संबंधित विमर्श न केवल शैक्षणिक जगत को समृद्ध करेंगे अपितु नई पीढ़ी को यह संदेश देने में सक्षम होंगे कि कला और दर्शन जीवन की दशा बदलने की क्षमता रखते हैं। बौद्ध दर्शन और कला का यह संगम मानवता की शांति, संवेदना और सहस्त्र का बोध कराता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I thank Professor Harsh Kumar from the bottom of my heart for being so direct and so explicit and in a crystal clear manner bringing out the linkages and the representation of Buddhist philosophy through the medium of art. Thank you so much, sir. Towards the culminating part of this session, I would like to invite Dr. Atul Narayan Singh to deliver a vote of thanks. And please greet him with a huge round of applause. I mean, he will be delivering the vote of thanks, making this seminar happen. थैंक यू सर। एक बहुत छोटी सी औपचारिकता है धन्यवाद ज्ञापन, इस हेतु मैं यहाँ हूँ। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय बोधगया से बुद्ध की धरती से बुद्ध के लिए जो बातें आज हम यहाँ सुनने आए हैं उसके लिए आप स्वयं वहां से आए, इसके लिए मैं आपका सर बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आपसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति इसके लिए मुझे नहीं समझ में आया कि बुद्ध की उसी धरती से मैं बनाऊं जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसके लिए आपसे कोई उपयुक्त व्यक्ति हो नहीं सकता था। संपूर्ण इस जो भी इस चराचर जगत में है, बुद्ध ने जो भी बातें कही हैं उन बातों को लेकर के जो तथ्य और तर्क उन्होंने कहे, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल थी, उसके लिए गोविंद सर से अच्छा व्यक्ति हमें नहीं समझ में आ रहा था कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन से कोई ऐसा कम्युनिकेटर चाहिए हमें जो बुद्ध की उस आइडियोलॉजी को भी समझ सके। इसके लिए गोविंद सर ने हमें समय दिया, आपका सर बहुत बहुत आभार। सबसे दुरूह कार्य, जब ये विषय तय हो रहा था कि बौद्ध दर्शन और कला का उस पर प्रभाव कैसे है, तो सबने कहा कि इसको समझने, सोचने और रखने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसको आसानी से समझ सके। तो हम लोगों ने बहुत डिस्कशन के बाद एक नाम तय किया था आनंद सर का। सर से बात हुई, सर ने इतनी सहजता से उसे स्वीकार किया और आज वो दिखा अत्यंत सहजता से, कितनी आसान चीजों में पूरे दर्शन और कला को एक साथ बहुत ही सारगर्भित रूप से सर ने हम सभी के समक्ष ला करके उसे उड़ेल दिया। आनंद सर, आपका बहुत बहुत आभार, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग आज यहाँ पर हैं। प्रोफेसर हर्ष कुमार सर और प्रोफेसर अनामिका रॉय मैडम, हम लोग के गुरु, मार्गदर्शक, मेंटोर, जो भी कह लीजिए। अगर आज हम लोग कुछ हैं यहाँ पर तो इन्हीं लोगों के नाते, इसी गुरु परंपरा से आगे निकलकर हम यहाँ पर आए हैं। आप दोनों के नेतृत्व में विभाग अपनी यात्रा गति में सुखद आयाम की तरफ बढ़ रहा है। आप दोनों लोग ऐसे ही मार्गदर्शन विभाग को, हम सभी शिक्षकगण, विद्यार्थियों, शोधार्थियों को देते रहे। आप दोनों लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, इतना सुंदर संयोजन के लिए हमारा उत्साह वर्धन किया, इसके लिए आप दोनों लोगों का सहर्ष आभार। रमाकांत सर, जिनके नेतृत्व में हमारा विभाग एक अकादमिक गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ा रहा है, हर समय हर क्षण सर के मार्गदर्शन, सर का सानिध्य हमें प्राप्त होता रहता है। अच्छे सुझाव और एक अच्छा नेतृत्व विभाग को आपके रूप में मिला है। आपने इस विषय को, इस पूरे सेमिनार को जिस तरीके से संयोजन देने के लिए हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त दिया है, उसके लिए रमाकांत सर आपका बहुत बहुत आभार।
हमारे समक्ष हमारी गुरु परंपरा से बैठे प्रोफेसर एच एन दुबे सर, आपकी अत्यंत व्यस्ततम दिनचर्या रहती है। हमारे विश्वविख्यात पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जयन पाल सर, सोशियो इकोनॉमी के महान अध्येता जिनसे सोशियो इकोनॉमी को जाना और समझा जाता है प्रोफेसर ओपी श्रीवास्तव सर, आप सभी शोधार्थी विद्यार्थी, दर्शन शास्त्र विभाग से उत्तम सर, शैलेन सर, और अगर अन्य अनन्य डिग्री कॉलेजों से आए हुए सभी प्रतिभागी गण, शोधार्थी गण और विद्यार्थीगण, हमारे परास्नातक के छात्रों, आप सब इस सेमिनार में हैं, इसीलिए यह ज्ञान गंगा आगे बढ़ती रहेगी। आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ठीक बाद दूसरा सत्र चलेगा, इसके संदर्भ में पंकज सर जानकारी देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। Now I'll request Dr. Suchitra to be on the stage. I'll be handing over the baton to her. So, Suchitra ma'am, please continue now. और जो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, जिसने इस पूरी के लिए प्रायोजन दिया है हमें, उसका हार्दिक आभार, धन्यवाद। क्योंकि बिना उसके हम यह कार्यक्रम ही नहीं इस तरीके से संयोजित कर पा रहे थे। तो आईसीपीआर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उनके सचिव, अध्यक्ष, जितने भी प्राधिकारी हैं आईसीपीआर के, उन सभी का आभार। थैंक यू सर।